वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाए, जमुनवाद साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। आज सो मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं वो उठाते हैं गरीबों की आवाज, मजलूमों की आवाज, जिनकी कोई आवाज नहीं उठाता उसकी वॉइस सो मानवता उठाता है। तो साथियों, आज की मुलाकात जिंदे लोगों के साथ। जिंदे हम उन्हीं को मानते हैं जो सच बोलना जानते हैं, वरना चुप रहना या झूठ बोलना मुर्दे भी जानते हैं। तो साथियों, आज का हमारा स्पेशल प्रोग्राम रहेगा कि बेगमपुरा यात्रा क्यों निकाली जा रही है, भारत में इसके पीछे क्या कारण है। तो 2-3 मेहमान हमारे साथ में गेस्ट जुड़े हैं। तो इनका नाम है एडवोकेट जीवन मल्ला, कुमार मल्ला जी, जो नेशनल प्रेसिडेंट है बहुजन द्राविड़ पार्टी के इंडिया से हैं, और मिस्टर अशोक साकेत जी हैं, जो नेशनल स्पोर्ट्समैन हैं, जो बहुजन द्राविड़ पार्टी के। और डॉक्टर कृपाल सिंह जो रीढ़ की हड्डी है वाइस मानवता की, ये इनके अभी हमारे साथ जुड़े हैं। तो बाकी और मेहमान भी जुड़े हैं इनके साथ में। तो बस सबका स्वागत करते हैं, उसके बाद प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। जी, जीवन मल्ला जी और अशोक साकेत जी और डॉक्टर कृपाल सिंह जी, आप तीनों वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी सबका स्वागत है। तो साथियों, हम बताना चाहते हैं कि इंग्लिश में डॉक्टर कृपाल सिंह जी जीवन मल्ला जी का इंटरव्यू लेंगे और हम बात करेंगे हिंदी में। तो डॉक्टर कृपाल सिंह जी, आप स्टार्ट कर सकते हैं जी। अच्छा, जीवन मल्ला जी, it's very nice to see you, and also the other participants. Welcome. I'm from here, Florida, USA. Jeevan Malla ji, just introduce yourself briefly, who you are for the program. वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। शास्त्रीय काल, वनक्कम in Tamil. We are proud to say that vanakkam to everybody. So myself, Advocate Jeevan Kumar Malla. My background is I'm practicing as an advocate in Supreme Court of India, New Delhi. At the same time, I'm a socio-political activist working for the non-Brahmins throughout the country. I'm working for the political liberation of the non-Brahmins in India. So they are the victims of this caste system. So nowadays I'm raising the voice for the non-Brahmins in India. So I'm very much happy to give my interview to your what I can see. It's a very international media. You two also working to liberate our people from the age-old caste system. So really, I'm happy one among with you. Thank you. Later we will discuss. Okay. Thank you. Mr. Ashok, would you introduce briefly also yourself, please? Yes. सत श्री अकाल। साथियों, मेरा नाम अशोक साकेत है और मैं दिल्ली में रहता हूँ। मध्य प्रदेश का मैं मूलतः निवासी हूँ। और जैसा कि मिस्टर जीवन कुमार मल्ला जी ने बताया, अभी हम लोग बहुजन द्रविड़ पार्टी चला रहे हैं जो नॉन ब्राह्मणों के लिए काम कर रही है, और उसका मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। और 20 जनवरी 2023 से हम लोग एक राष्ट्रीय स्तरीय बेगमपुरा भारत प्राप्ति हेतु भाईचारा यात्रा निकाल रहे हैं। उसी की तैयारी में अभी हम लोग लगे हुए हैं। Thank you. Jeevan Kumar ji, please tell me initially, what does Begumpura means to you? First of all, I want to brief about the ideology behind the Begumpura. Yes. It takes around 10 to 15 minutes. If you can make it a little brief, that'll be better. Okay. Then we can go to the next thing. Yes. Actually, the Begumpura, the concept behind the Begumpura, a mutual aid on the participatory political democracy, social democracy, economic democracy, cultural democracy, with ruling class and ordinary citizens' participation with sharing responsibility and benefits. Non-Vedic, non-religious faith, materialistic
line of thinking have been fundamentally egalitarian, without any oppressive and coercive hierarchical institutions to govern. It also signifies a freedom of women from exploitation and assault, prefer equal opportunity partner in civil and defense matter. Thank you. Begumpura reflects a direct link with Indus Valley civilization, the archaeological sites, Harappa and Mohenjo-daro in the present Pakistan and other sites in India. The first modern account of the ruin of the Indus Valley are those of Charles Mason, a soldier of the British East India Company Army in 1829. The Maharaja Ranjit Singh rule was that time, 1801 to 1839, for conquest of the foreign ruler like Alexander the Great and other invader. It is also believed that Maharaja Ranjit Singh's strategically defense policies and militarizations are finalized with an expert advisor from the British, French, American, Russian, German, Italian. Currently, Maharaja Ranjit Singh's Punjab, the land of 5 rivers, boundary composed with the Pakistan, India, China, and Nepal. Yes. You see, Begumpura, Begumpura, according to Guru Granth Sahib, Begumpura, a city, a state, a country, a globe, a place with no sorrows, no pain, little taxes or cash, fair distributions of resources. There is no wrongdoing, worry, terror, or torture. This verse is an extract taken from Adi Granth and Sri Guru Granth Sahib. Thank you. In course of the liberation of the Indian masses from the slavery condition of his times, is actually his time also, our people were lived like was an animal. So that's what, in the course for the liberation of the Indian masses from the slavery conditions of the time and a partial rule to total self-rule. Yes. At the time of Sant Guru Ravidas, yes, India was not only a slave from the political point of view, but people here were also bound in the chain of mental slavery. Yes. Apart from this, the society was also trapped in the web of high, low, and caste, class division, religious narrow-mindedness. Sant Guru Ravidas did not compromise with these evils. I may add over here. Yes. Resolved to create an ideal society. Yeah. Here I may add that, when the Adi Granth was compiled, Guru Arjan Dev Ji, 5th Guru, he added the hymns of Bhakt Ravdas Ji, which talks about this. Correct. That's what I'm coming to that point also. You are right. I'm coming to that point also. Also the time of Khalsa, Bhagat Kabir Ji uses the word Khalsa. And then the very image of Golden Temple itself, what is known Golden Temple, Harmandir, actually that itself is also a kind of miniature city of Begumpura. If you look at it, 4 doors and rounded. Yeah. So please carry on. Guru Ravidas, rich in prestigious talent, he has called dependence a sin. Guru Ravidas considered independence as the root cause of happiness, and dependence as the root cause of unhappiness. Absolutely. Sant Guru Ravidas said, freedom is not free. Freedom is to be earned before
it can be enjoyed. Mhm. Sant Yes. Guru Ravidas, one of the most celebrated untouchable sage of the 15th and 16th century, Mhm. is known as the leading star of Nirgana Sampradaya, a Yes. sect or tradition of devotees of the formless God. Yes. From Of the there, later medieval century in India, he was a cobbler, sage, yes. philosopher, and social, political reformer, and all rolled into one, who coined the bhakti as a method of social protest against the century-old oppressive system of the social hierarchy, inhuman practice of untouchably based on the caste birth formula. Very true. As with all low caste, he Mhm. too feel a victims to such a sorts of pernicious social restrictions and practice emanating from the Brahminical Hindu Sanatana Dharam. Yes. As you are saying, the whole situation of caste system is actually the worse than the apartheid system. Apartheid Correct, system was exactly. there, short-lived and gone, but the caste system, such an oppressed system, has been going on for thousands of years, and there's no end to it. Even after Correct, the correct, independence of India and after all the struggles of Ambedkar and all the other people, it still stays the same. The correct, minority group exactly. is ruling the majority, which are the so-called lower caste people or the majority people, which is unfortunate and needs to be Actually, reversed. our identity is a Dravidian identity. Yes. But we are the majority people of this India. Mhm. In democracy, we are living a very pathetic situation. Majority people don't know what is their value of their vote. Yes. Microscope community is ruling this country. Yes. Microscope community. एक मिनट अशोक जी एक बात बताएं, जैसे आप बोल रहे हैं कि इसमें नॉन ब्राह्मणिज्म पार्टी आप लोगों की है, तो जैसे नॉन ब्राह्मण, अगर ब्राह्मण लोगों की जो पार्टी आए हैं, अगर वो शूद्रों को उसमें शामिल नहीं करते, तो फिर आप लोग उसमें अपने तरफ से आंदोलन भी करते हैं, उसमें मतलब बहुत सारे करते हैं लोग, तो ऐसा क्यों नहीं कर रहे आप लोग? ब्राह्मणों को ऐड क्यों नहीं कर रहे अपनी पार्टी में? इसका क्या कारण है पीछे, अशोक जी? देखिए, कारण बिल्कुल स्पष्ट है। हाँ, हमारा जो पिछला इतिहास है, इस देश के लोकतंत्र का जो इतिहास है, उसका जब हम अध्ययन करते हैं, तो ये जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, इन्होंने जब भी हमारे संगठनों में, हमारी पार्टियों में अपना पार्टिसिपेशन किया है, तो हमारे जो संगठन, हमारी पार्टियां हैं, वो हमेशा डैमेज हुई हैं, हमेशा वो पतन की ओर अग्रसर हुई है, और वो सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणवादी षड्यंत्र के कारण। तो क्योंकि हम लोग मान्यवर कांसीराम साहब को अपना गुरु मानते हैं, और उन्होंने एक बात कही थी कि हमारा जो समाज है वो दूध की तरह है, और इस दूध में जो ब्राह्मण है वो नींबू के रस की तरह है। अगर एक बूंद नींबू का रस हम उसमें डालते हैं तो पूरा दूध फाड़ देगा, ये हमको डर है। इसलिए हम जो है इस बात से सतर्क हैं। तो हमारा बिल्कुल सीधा सा कारण है कि हम अपने विचार को, अपनी पार्टी को, अपने संगठन को प्रदूषित नहीं होने देना चाहते। नहीं, इसमें एक सवाल और भी खड़ा होता है ना इसमें, कि आप ब्राह्मणों से पीछे हट रहे हैं या ब्राह्मणवाद से पीछे हट रहे हैं? इसमें दो चीजें हैं ना। मैं स्पष्ट कर दूं, हाँ। जो ब्राह्मणवाद है, कोई भी वाद हो दुनिया में, वो उसका जनक कोई ना कोई होता है। जो इंडियन संदर्भ में जो ब्राह्मणवाद है, उसका जनक ब्राह्मण है, और जब तक ब्राह्मणों की इस निरंकुशता पे लगाम नहीं लगती, तब तक ब्राह्मणवाद कंट्रोल नहीं होता। अब आप एक ब्राह्मणवाद की एक बुराई को आप समाप्त करने जाओगे, और ब्राह्मण वर्ग 10 नई बुराइयां तैयार कर देता है। इस वजह से आज तक ब्राह्मणवाद फला फूला है, उसमें कमी नहीं आई।
तो इसलिए Good हमें ये point. देखना है कि इसका जनक कौन है, और जो जनक है उसको कंट्रोल करना ये मानवतावादी लोगों का काम है। तो इसमें जी समझ सकते हैं हम पहले से, मैंने 2-3 हमने वीडियो भी डाल रखी है हमारे फेसबुक पे। हमने कहा कि ब्राह्मणों को धर्म का कोई ज्ञान नहीं है और वो जी धार्मिक है भी नहीं है। तो हमने उनको ये भी चैलेंज किया था, अगर उनमें दम है तो हमें उनको 21 लाख रुपए इनाम के भी देंगे, अगर किसी ने ब्राह्मण ने ये साबित कर दिया वो धार्मिक है। तो वो जब धार्मिक है नहीं तो उनकी बात मानने का कोई सवाल उठता ही नहीं है। तो ये तो बहुत सारे बहुजन जो इस गड़बे में फंसे हैं कि उनकी बात को, हर एक बात को मानते हैं, त्योहार मानते हैं, उनके जितने भी त्योहार चलते हैं। तो ये ब्राह्मणवाद के गड़े में तो खुद फंसे हुए हैं। तो इनको निकालने के लिए ब्राह्मणों को पहले इसको त्योहारों का दिया गया। यही जो मुख्य षड्यंत्र है वो यही है हाँ, कि हम ब्राह्मणवाद के उन्मूलन की बात तो करते हैं, लेकिन हम ये नहीं देख पा रहे कि उसका जो जनक है, यहाँ पे हम जातिवाद की बात करते हैं, आप जातिवाद खत्म करने जाए तो एक नया प्रिंसिपल हिंदूवाद परोस दिया जाता है। वो कौन करता है? वो ब्राह्मण करता है इस देश का, कोई और नहीं करता। तो हम एक समस्या से लड़ने निकलते हैं और दूसरी समस्या ये क्रिएट कर देते हैं। इसलिए, और ये संवैधानिक भी है, आप देखेंगे जो इस देश की सबसे बड़ी तथाकथित सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जब उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होता है तो उत्तर प्रदेश की 20% पॉपुलेशन मुस्लिमों की है। उनको उन्होंने उस पार्टी जो लोकतांत्रिक पद्धति है, जो इलेक्शन प्रक्रिया, उसमें वो हिस्सेदारी नहीं बनाया, एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दी। तो जब इस देश में 20% मुसलमानों के बिना ब्राह्मणों की राजनीति चल सकती है, तो हम 85% बहुजनों की राजनीति भी 3% ब्राह्मणों के बिना चल सकती है। Good तो point. इसलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपने सिद्धांत अपने प्रिंसिपल पे एकदम क्लियर है और हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। जी बढ़िया। मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ। मैं देखो उसमें क्या है, बहुत सारी चीजें चलती हैं कि ब्राह्मणवाद को पहचानने के लिए हमारे अंदर जब तक वो थिंकिंग नहीं होगी पहचानने की कौन सही है कि कौन गलत है, तब तक हम ब्राह्मण की फैलाई हुई चीजों को नहीं पहचान सकते हैं। वो एक नहीं, आपने तो कहा दूसरा पॉइंट तैयार कर, दूसरे के पास में हजारों से पॉइंट रखे बनाए हुए, आप एक से लड़ेंगे वो दूसरा ले जाएंगे, तीसरा ले जाएंगे, चौथा ले जाएंगे। नागपुर में जो बैठे हैं, नागपुर के जो आतंकवादी हैं, वो यही काम करते हैं दिन रात। तो दिन रात मतलब कुछ ना कुछ ऐसे प्लान बनाते रहते हैं। तो हमारे बहुजन क्या करते हैं, अपने वास्ते अपने आप को गुलामी से निकालने के लिए वो तो 20 आवर तकरीबन वो इस प्लान पर लगे रहते हैं कि इनको कैसे गुलामी फंसाना है, इनको कैसे फंसाना। लेकिन हमारे लोग क्या करते हैं, 20 सेकंड भी नहीं सोच सकते इनके बारे में, हम गुलामी से कैसे निकलेंगे। ये 20 सेकंड भी सोच पाएंगे ना, तो कोई भी माई का लाल क्या, ये भारत के ब्राह्मण क्या, कोई विदेशी या पूरे वर्ल्ड का शैतान भी गुलाम नहीं बना सकता है लोगों को। सिर्फ 20 सेकंड सोच ले कि गुलामी से कैसे निकलना है। और बहुजन इतना अगर सोच लेंगे तो कोई नहीं, मैं उम्मीद के साथ मैं कहता हूँ कि इनको कोई गुलाम नहीं बना पाएगा। डॉक्टर कृपाल सिंह जी कुछ कहना चाहेंगे? Yes, the problem is that Brahmins may be very sweet on the surface, but deep down they are very cunning and they are very determined to keep upper hand one way or another. That is their way of perpetuating themselves one way or another. I like to ask Jeevan Kumar ji more about it, what he thinks about the Brahman strategies trying to suppress us. Babasaheb Ambedkar was also there saying that every Brahmins wanted to maintain their supremacy. Because actually we people are getting the ideas from our own gurus and bhagats. Whatever ideas and thought had given by our gurus, we are going to implement, or we are going to practice according to the vision and mission of the gurus and bhagats. But Brahminical forces also having their own Vedas. They are also having the Vedic law. In their childhood onwards, they are also learning their Vedic law. What the Vedic law
preachers to maintain their day-to-day life. So according to their Vedic law, according to the Brahminical scriptures, they are also practicing. That's all. I don't want to say any wrong to them, because their law says about that. Their scriptures are preaching how to behave the Brahmins, how to suppress the Shudras. Yes. Honestly, they are following. That's all. But when it comes to our concern, Dravidian concern, Bahujan concern, our people are not ready to follow our gurus and Bhagav's messages. That is a problem. Yes. So please tell me now about this yatra जो है आपका जो एम है यात्रा पटना साहब से आनंदपुर साहब ले जाने की, कैसे आपका इंतजाम है और कैसे आप लोगों को इससे जागृत पैदा कर रहे हैं, इस बारे अपने विचार शेयर करो. Actually, everybody know what is the situation is going on in India. How these Brahminical forces, how the RSS is playing the main role in the Indian politics. Because actually, the Congress party and BJP party, Aam Aadmi party, and even Communist party also controlling by the socio-political cultural movement. That movement is called as the RSS. It is not a cultural movement. It is a political movement. It has its political philosophy also. Based upon that political philosophy, RSS political philosophy, the party, whoever the mainstream, if they are the so-called mainstream politics like Congress, BJP, and Aam Aadmi party, they are executing their ideas to the common public. That's all. I wanted to tell you one thing, that Manevar Kansiramji realized the political conspiracy and started the begumpura politics in the last decades of the 20th century. Kansiram was the first person. He understood the political conspiracy and he started to achieve the begumpura Bharath. In the 21st century, is untimely death and untrust as with the job of carrying his mission forward to establish a Dravidian democratic begumpura rule in India. Our rivals are ABCD teams of Aryan or Sarvajan. You know, former Prime Minister P.V. Narasimha Rao had renamed Aryan as Sarvajan in 1997. Nobody knows. Narasimha Rao renamed Aryan as Sarvajan in 1995. Interesting. I did not know that. But Narasimha Rao, the Brahmin guy who became a Prime Minister of India, he sold in the name of LPG, liberalization, privatization, and globalization. He started to sell all our public sector to the corporate company. He was the person introduced the concept Sarvajan. After that Sarvajan, that Bahujan, but Lord Buddha told Bahujan Hitaya, Bahujan Sukhaya. But later, you know, the Kansiramji movement started to work for Sarvajan Hitaya, Sarvajan Sukhaya, the mission of the Narasimha Rao, former Prime Minister of India. Yes. But right now I tell you, Sant Guru Ravidas had visualized a sorrowless society known as begumpura, which is casteless, classless, and nil untouchability. There is no injustice, no worries, no terror, and no torture. Guru Ravidas tells his disciples, brother, I have found the system which may be achievable in near future, but everything is just and fair in it. He was telling, yes, I have found a system which may be achievable in near future, but our Guru Sikhism's vision
if anybody asks to the Sikh people, what is your vision means? The Sikh people's vision is to achieve the begumpura Bharath. Yes. Yes. But for this yatra, we are going to carry the messages of our gurus, bhagats, and all the Mahapurush of those who worked for the political liberation of the so-called SC, ST, OBC and religious minorities. The Pule, Sagu Maharaj, Narayana Guru, Ayyangali, Emmanuel Segaran, Periyar, Kanshiram, Baba Ambedkar. Those people worked. Those people worked for the political liberation of the so-called SC, ST, OBC and religious minority people. So in this yatra carries all the Mool Nivasis, Gurus and Bhagats message to the nook and corner of the India. Our mission is to 2024. We should not allow these people to, once again, we should not allow the Ram Raj to destroy this country. Because Begumpura is one side and Ram Raja is one side. Which path we want to choose? Begumpura Raj, Begumpura Khalsa Raj, or Ram Raj? Because now the people are seeing the Ram Raj. We have to work day and night to achieve the Begumpura Raj. That is the real tribute to all the Mahapurush, all the Gurus also. So that's what on 20th January, we have planned to start our yatra from Patna Sahib Gurudwara, the birthplace of Guru Gobind Singh. And it will end at the Kanshiramji's birthplace, that place, Punjab, Bunga Sahib. Yes. So around 55 days we are going for this yatra. We have planned to meet around 4 crore and 5 lakhs people. 4 crore and 5 lakhs people we have planned to meet, and we have planned to produce 4,500 leaders throughout the country, because the leader scarcity is among our Bahujun Dravida Samaj, because a lot of people are working like a chamchas. They are working like a chamchas to the Brahminical forces. So we are planning to create leaders among. We need a lot of leaders in our Bahujun Dravida Samaj. So this yatra, not only simply we are throwing the messages of our gurus and bhagats. In this yatra, we are having a hope to link and network from Kashmir to Kanyakumari, Gujarat to Assam under the one banner to create the begumpura Bharath in 2024. That is our vision of this. Yes. It's very laudable mission. And I want to wish you the very best of luck about it. अशोक जी, आप ऐड करना चाहें कुछ इसमें और? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दो क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ उसके सामने थोड़ा। अशोक जी, एक प्रॉब्लम आ सकती है आप लोगों के सामने। ये गुरुओं की बात है, गुरु रविदास या संत रविदास या गुरु नानक साहब या गुरु गोविंद सिंह जी तक तो ठीक है, गुरु है, ये भगत है, साहिबान है। लेकिन जो काशीराम है, जो पेरियार है, ये महान इंसान हो सकते हैं। इनको फिर आप अगर इनको एक साथ में लेके चलेंगे ना, आप बड़ा खाएंगे, तो इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे इनके बारे में? क्योंकि लोग इसके बाद सवाल उठा सकते हैं आने वाले वक्त में, भाई इनको आप लोगों ने एक साथ में कैसे खड़ा कर दिया? तो गुरु है, ये महान पुरुष है, करेंगे जी। I want to tell this answer. I want to tell this answer to this question. आवाज किसकी आ रही है? Hello. हाँ जी, बोलिए। Actually, our fight is not only for the cultural justice. Our fight is for the social justice, economical justice, political justice too. Kanshiramji fought for the political justice for the Bahujun Dravida Samaj in India. He was the person consolidated all the people who were victim of this caste system. He was the first person consolidated all the people under one banner. He was the person revival of 1699. What Guru Gobind Singh did. Guru Gobind Singh consolidate all the people under one banner in the year 1699. That day the Khalsa was born.
Yes. So our people still now, our people are not from their own limited area. Yes. Because Gurus and Bhagat's message need for our Sudra community, not for Canadian people, not for Italy, not for America. Because their Vedic law is not preaching them to oppress the majority people of India. Their Vedic law, their Christianity or Muslims, not their scripture is not to oppress the lowest among the lowest people of their country. Here the Brahminical forces are oppressing the majority people of the India. The Guru's messages need for the Tamil Nadu people, Kerala people, Andhra people, because those people are also facing the same discrimination, the same oppression, same exploitation. Guru's messages liberate those age-old caste system. But you people are going to America and sitting safely. But we people are suffering. We people are suffering in this land. अगर सेफली आए हैं तभी तो इस पे मानवता खोला, अगर सेफली ना आते तो इसको कैसे खोलते? You people are saying there and not comfortably. Mentally you are India only. Physically you are in America, but mentally you are in India. Yeah, I want freedom. Yeah, these are our roots. These are our roots. Yes. So actually, our Gurus and Bhagat's message need for India. Yeah, India is a mother country, no matter what, where you live. You know. Yes. Actually, you have to concentrate. You have to also concentrate to work for the majority people of the Indians socio-political and cultural liberation. True. मेरी किताबें आ रही इसके ऊपर है, जो जात पात का जो चल रहा है ना, इसमें भारत में आतंकवाद चला जात पात का, इसको खत्म करने की मैंने किताब लिखी, हम करेंगे जात पात और नस्लवाद का सर्वनाश। बहुत जल्दी इसको रिलीज करें किताब को, और ये जो भी पढ़ेगा ना दिमाग को में से जात पात तो ब्राह्मण के दिमाग से जात पात निकल जाएगी, क्योंकि ब्राह्मण तो खुद इसका जन्म दाता है जात पात का, उसके दिमाग से, क्योंकि ब्राह्मण भी खुद मानसिक तौर से गुलाम है। जो आदमी गुलाम होता है वही दूसरे को फंसाता है गुलामी में, जो आदमी आजाद होता है उसको क्या जरूरत है दूसरे गुलाम फंसाने की। तो एक मेरा और सवाल है अशोक जी आपसे, जैसे कि आप लोग पार्टी बना रहे हैं, पार्टी बनाई आप लोगों ने, इसका कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है आप लोगों को? जैसे अभी बिकाऊ माल चल रहा है यहाँ पर, कोई जो नेता है वो मतलब जैसे पशु बिकते हैं मंडी के अंदर, जो डंगर बिकते हैं, मरे हुए बिकते हैं या मतलब वैसे भी जाते हैं, ऐसे हालात हो गए कहीं भी उनको बेच देते हैं ले जाकर के इनको नेताओं को, और कोई भी उनको खरीद लेता है, ऐसे हालात चल रहे हैं। तो क्या ऐसा कोई डॉक्यूमेंट आप लोगों के पास में है कि जिन लोगों को आप पार्टी में रखेंगे वो कभी बिकेंगे नहीं? ऐसा कोई डॉक्यूमेंट आप लोगों के पास में कोई तैयार किया आप लोगों ने अशोक जी? देखिए, पहले तो मैं कुछ चीजें स्पष्ट कर दूं कि हमें ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जो इंडिया में जो ब्राह्मणिज्म है, ब्राह्मणवाद है, वो यहाँ का विचार है, भारत का विचार है, और जो पूंजीवाद है, समाजवाद है, ये वेस्टर्न विचार है, पश्चिमी देशों से आए विचार है। और हम ये जानते हैं कि हर देश, हर समाज अपने टाइम परिस्थितियों के हिसाब से कोई विचार पैदा करता, बनाता है। यहाँ जो ब्राह्मणवाद है उसके मुकाबले पूंजीवाद और जो समाजवाद की एक बड़ी थ्योरी है वो आज तक कामयाब इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि जो समाजवाद, मार्क्सवाद, पूंजीवाद है वो इंडियन कॉन्स्टेंट में, भारतीय परिस्थितियों में वो विचार पैदा ही नहीं हुआ। जो मार्क्सवाद है वो समाज को दो भागों में बांट के देखता है कि एक सर्वहारा वर्ग है और एक बुर्जुआ वर्ग है। पूंजीवाद भी मुख्य जो लेबर और जो मालिक की थ्योरी पे काम करता, लेकिन भारत में जो व्यवस्था ब्राह्मणवाद के तहत दी गई है तो शायद दुनिया में इतनी घिनौनी व्यवस्था और कोई नहीं है। तो ये जो ब्राह्मणवाद की जो व्यवस्था है उसको जिया है यहाँ के जो हम जिनको महापुरुष कहते हैं, जिनको संत गुरु कहते हैं, उन्होंने उस व्यवस्था को साक्षात जिया है, भोगा है।
इसलिए उन्होंने जो विचार दिया वो भारत में ज्यादा यथार्थ है अगर उस पे काम करें। अब जैसे सदगुरु रविदास महाराज ने जो बेगमपुरा का कॉन्सेप्ट दिया, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और लोग इसको धार्मिक कॉन्सेप्ट समझने की भूल करते हैं। ये सामाजिक राजनीतिक कॉन्सेप्ट है। जिस चीज में राज की बात हो रही है, एक शहर की बात हो रही हो, वो धार्मिक कॉन्सेप्ट नहीं होता, वो समाज की बेहतरी का कॉन्सेप्ट है। राज की बात कर रहे हैं, राजनीति का संदर्भ है आज के संदर्भ। तो पहली बात बेगमपुरा राज उन्होंने कॉन्सेप्ट दे दिया, लेकिन उसको गुरु गोविंद सिंह जी क्लियर कर देते हैं कि उसको भी मतलब वो राज की बात करते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी को किसी को राज न दे है, जो भी ले निजबल से ले है। फिर वो कहते हैं कि राज बिना न धर्म चले, धर्म बिना सब चले, मतलब ये भी कह देते हैं। फिर वो भी क्या, शस्त्र के अधीन है राज, मतलब शस्त्रों के अधीन राज होता है, ना कि सुने जी जी जी। गुरु ने, जो गुरु गोविंद साहब ने जो बात कही, धर्म, धर्म का संदर्भ क्या, धर्म का अर्थ क्या है? धर्म का अर्थ संप्रदाय नहीं है। धर्म का अर्थ एक विचार है, एक व्यवस्था। वो आज के जो संदर्भ में धर्म का नाम आते ही एक संप्रदाय बना दिया जाता है। उसको तो ऐसा अब धर्म को सच्चाई और ईमानदारी मान के चले, सच्चाई और ईमानदारी धर्म होता है, झूठ और बेईमानी अधर्म होता है। लिहाजा कहते हैं समानता और इंसानियत धर्म होता है, असमानता और छुआछूत अधर्म होता है। इसको क्लियर कर देते हैं इसका। तो इसको बचाने के लिए गुरु ने कहा कि शस्त्र के अधीन है राज, सच्चाई और ईमानदारी को। क्योंकि अगर सच्चाई और ईमानदारी अगर सच्चाई ईमानदारी को बदला देखा, बुद्धों का कत्ल हुआ यहाँ पर भारत में। बुद्धों का कत्ल क्यों हुआ, बुद्धिस्ट का कत्ल क्यों हुआ, बदल का इसका कत्ल हुआ कि उनके पास में विचार तो थे लेकिन हथियार नहीं थे। अब सिखों को कत्लेआम तो बहुत करने की कोशिश की, लेकिन सिखों ने उनको नाक से चढ़ने जब हुआ, इनको 1984 में देखा होगा आपने कि वहां 100 सिख आ रहे थे कि 10 लाख फौज को नाक से लकीर निकलवा करके उखेड़ कर फेंक दिया लोगों को। अगर इनके पास हथियार ना होते तब तक इनको समाप्त कर देते सिखों में। तो इनका चलता रहता है। तो इसमें डॉक्टर कृपा सिंह जी कुछ कहना चाहेंगे? Yes. Yeah, I think this martial aspect is also important to adopt. You know, you can have all your vichar, but to protect your vichar and defend on them, talking alone sometimes is not sufficient, because the people with physical pressures, they can overpower you. You know, that's what has happened through the invasions and all. There were all the high ideas, but those ideas didn't help when Babur invaded India or Alexander invaded India. The ideas didn't help because they were not able to put them into practical shape to defend themselves. So it's very important that along with Vichardhara, we must have the defense preparedness too at our local level. You know, वो जो है आर्मी की, that's different, but हम each घर जो है, each जगह वो जो है, जैसे ये RSS ने लाठियां ले रहे थे ना, हमारे अपने जो घर में ही ऑलरेडी चीजें हैं, उनको सोचना चाहिए कि लोड पैने पर कैसे हम उसको वर्त सकते हैं अपने आप को डिफेंड करने के लिए, अपनी फैमिली को डिफेंड करने के लिए। ये भी साथ सोचने की जरूरत है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। और जो आपने कहा बिल्कुल सही बात है। और इसी संदर्भ में जो हमारी ये यात्रा है, ये हम 20 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में लेके जा रहे हैं। और हमारा प्रयास है कि समाज को, जो हमारा बहुजन द्रविड़ समाज है, उस पे हम अपने जो महापुरुषों के जो मूल विचार है वो समाज तक लेके जाएं, समाज को उससे अवगत कराएं। क्योंकि अभी हम देखते हैं कि भारत में एक छोटा सा वर्ग है जिसके बीच में ये सारी चीजें डिस्कशन होती हैं। एक बहुत बड़ा वर्ग समाज का, करीब 90-95% वर्ग है जहाँ पे ये सारे डिस्कशंस होते ही नहीं। वो तमाम तरह की समस्याओं से जूझ रहा है। तो उन तक पहुंचना जरूरी है। उन तक जब हम पहुंचेंगे, अपने महापुरुष गुरुओं महापुरुषों की बातों को उन्हें रखेंगे उनके बीच में, तब वो तैयार होंगे। और विचार कोई भी हो, जब तक उसको बचाने वाले लोग नहीं खड़े होते तो कोई विचार बचता नहीं हो। विचार कोई अमर नहीं होता, विचार को पालना पोसना पड़ता है, बचाना पड़ता है। तो उसके लिए हम लोग
जी जी भाई, इसमें देखो अगर आप लोग पंजाब तक करें तो उसमें हम नैंग सिंह जो जत्थेबंद दिया हूँ, आप लोग साथ में इसमें होंगे और प्रोटेक्शन भी देंगे, मतलब एज एक मिलिट्री के हिसाब से आपके साथ में रहेंगे वो। और मैं संपर्क किया, मैंने पंजाब तक जा रही है हमारी बात। तो मेरा एक सवाल और भी है, मैं जैसे कि वकीलों की बात लेते हैं हम। अब जीवन कुमार मल्ला जी वकील है, और वकील जो है ना, इंडिया की बात है, क्या आप पूरे वर्ल्ड की बात ले लो, 99% वकील है जो झूठ बोलते हैं, झूठ बोल के केस लड़ते हैं, झूठ बोल के पास होते हैं, झूठ बोल के सारा काम करते हैं। और जो मिशन लेके चल रहे हैं अभी सच्चाई और ईमानदारी का, संत रविदास जी सच के मुजस्मे हैं, गुरु नानक साहब सच का मुजस्मा है, तो जितने भी महापुरुष हैं वो सच्चे महापुरुष हैं। उनकी बात को आप, अगर आपके अंदर सच्चाई नहीं है तो उसको कैसे फॉलो करेंगे आप, उसको कैसे लेकर जाएंगे आगे, क्यों, कौन आपकी बात पे यकीन करेगा? इसके लिए आपके पास में क्या, मतलब आप लोग क्यों, मतलब बहुत सारे वकील देखे हमने, झूठ बोल करके काम निकालते हैं, और झूठ बोलने वाला कभी आदमी के ऊपर कौन विश्वास करेगा? तो इसको आप कैसे क्लियर करेंगे? आप जो है ना, आपने अभी कहा 99%, 1% सर आपने गुंजाइश छोड़ी है। मेघनाथ जी, सर मेघ जी, हेलो हाँ सर मेघ सिंह जी, हाँ जी बताइए। क्या हम सभी पे ऊपर पैमाने एक रखते हैं? 99 इंसान सभी बराबर होते हैं? कोई भी पेशा 100% बुरा नहीं होता, कोई भी पेशा 100% सही नहीं होता। अभी भी हमको 100% मान के नहीं चलना चाहिए सर। जी मैंने 1% छोड़ दिया, इसीलिए छोड़ा मैंने। हेलो जी जी बिल्कुल, आपने कहा 99% होते हैं, 1% आपने गुंजाइश छोड़ी। हाँ। मतलब 1% ऐसे भी हैं लोग जो ऐसे प्रोफेशंस में होके भी ईमानदार होते हैं। Yes, yes. वही है ना, That is 1% इसी बात को निकालना चाहता हूँ, Yes, ताकि ma'am. ईमानदारी से आगे चलें और धक्के खाकर नीचे नहीं गिर जाए। क्योंकि क्या हुआ ना, बड़ा मिशन देके चलता है ना जब आदमी, तो बड़े मिशन के पीछे सच्चाई ईमानदारी काम करती है, ऐसे नहीं चलता। एक लीडर की गलती, अगर लीडर गलती करता है वो 1000 गलती को बराबर होती है, संत मस्किन जी कहते हैं। एक आदमी, अगर एक आम आदमी 1000 गलती कर रहा है, उसकी एक गलती के बराबर होती है। एक लीडर अगर एक गलती करता है, उसकी 1000 गलतियों से भी ज्यादा बराबर, क्योंकि वो उसकी बात को सब सुनते हैं। अगर उसकी बात गलत निकलती है तो हजारों को नुकसान पहुंच जाएगा, करोड़ों को नुकसान पहुंच जाएगा। तो इस करके सच्चा और ईमानदार होना बहुत जरूरी है सच्चे महापुरुषों के मिशन को चलाने के लिए। जी वो तो बात ठीक है। ठीक है, आपने जो कहा वो ठीक बात है। मैं इस विचार को मानता हूं कि बोलने से ज्यादा जरूरी है करना। हम लोग अपना काम करके लोगों को जवाब देना चाहते हैं, वो तय करें कि उनको साथ आना चाहिए या नहीं। हम मुंह से कुछ भी बोलते रहे, हम ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटते रहे, तो इससे कुछ नहीं होने वाला। जरूरी है कि हमारे काम में वो सब दिखना चाहिए। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और जब से एक्टिव हुए हैं हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, और उसी का नतीजा है कि आज आपके संपर्क में बात कर रहे हैं। तो हम अपने प्रयास में जो हमारा कमिटमेंट है उस पर हम लोग लगे हुए हैं, और हर हाल में अभी उतना ज्यादा सहयोग नहीं मिल रहा समाज से। मैं अपील करता हूँ, हमारा जो बहुजन द्रविड़ समाज है, दुनिया में कहीं भी है, भारत में हो, कनाडा में हो, अमेरिका में हो, ये समाज के जीने मरने का प्रश्न है। अगर भारत में ब्राह्मणवाद कंट्रोल नहीं किया गया तो समाज बड़े पतन की ओर जाएगा। और हम बेसिक जो हमारे साधन संसाधन है उसमें भी चल रहे हैं, और हमने जो कमिटमेंट किया हम तो चलेंगे, चाहे भूखे रहना पड़े, मैदान में सोना पड़े, जो भी करना पड़े हम तो करेंगे। क्योंकि हमें चिंता है, हमारी टीम को चिंता है कि हमारे समाज तक हमारे महापुरुषों के विचारों को पहुंचना चाहिए। अब ये समाज तय करे कि हम आ रहे हैं समाज के पास, समाज कैसे रखता है। समाज मैं पहले बता मैं आपको पहले बता रहा हूँ, समाज तय नहीं करेगा, समाज आप लोगों को तय करना पड़ेगा कैसे करना। समाज की थिंकिंग को, अब अपने हर एक इंसान की थिंकिंग अलग अलग होती है। वो ये तो 40 साल से जो लीडर काम कर रहे हैं भारत में, वो नहीं आए तो उनको बहुत सारे लीडर देखे होंगे आपने, जिनको 40 45 50 साल हो गए उनको काम करते हैं, वो मिशन चला रहे हैं। उनका एक भी एमएलए आया था उसमें नहीं गया है, उसमें क्या नाम है, जो पार्लियामेंट में नहीं पहुंचा होता। तो फिर किसके ब्याज पर समाज देखेगा? समाज नहीं देखेगा, समाज को सही रास्ता दिखाना पड़ेगा, तभी वो समाज देखेगा। सुने, मैंने वही तो बोला, हम बातों से नहीं, हम अपने काम पे यकीन रखते हैं, और हम काम से बताएंगे कि हम सही है या गलत है। तो समाज काम देखे और डिसाइड करे।
Yeah, बिल्कुल बात आप you're correct. We have to actions speak louder than the words. Siddharth Veera Singh, is there anything you like to say here? I want to say something. Yeah, please go ahead. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੱਟ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲਿਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਨਜ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਕਾਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਉੱਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੀ, ਜੋ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਮਾਰਚ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਤੋੜੇ ਹੋਏ ਸ਼ੂਦਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਚਲਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਫਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦਾ ਕਤਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਫੋਰਸ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਗਈ। ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਅਗਰ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਫਿਰ ਟੁੱਟਿਆ, ਸਾਡਾ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਫਿਰ ਬਿਖਰ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਇਆਵਤੀ ਕੋਲੇ ਕਮਾਂਡ ਹੈ, ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਿਰੋਲ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਗਲਮੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ, ਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਕੰਸੈਪਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਹਲੀਮੀ ਰਾਜ, ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਰਾਜ ਦਾ ਸਥਾਪਨ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਡਾ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੰਨੋਂ ਫੜ ਕੇ ਹਿਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਾਗਾਂਗੇ, ਅੱਖਾਂ खोलेंगे। थैंक यू, थैंक यू। ये बात जरूरी है जो आप बोल रहे हैं, मतलब ये बहुत जरूरी है। जो हमने सवाल भी किया ना, ये समाज का सवाल है। यस बिल्कुल गुड सवाल है, गुड सवाल है। जी शुक्रिया। Let me go to Meghraj Singh, to Mr. Sarhan. आप कुछ कहना चाहते थे, आप करें एक बात। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ I can speak in English, Hindi or Punjabi, in any language I can speak. That's great. ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਚਿਹਰੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਛ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਾਂ। ਜ਼ਰੂਰ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਜਨ ਦਰਾਵੜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਬੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਦਿੱਲੀ ਬੇਸ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਨਾਂ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਪਣਾ ਨਾਂ। ਨਾਂ ਮੇਰਾ ਗੁਰਦਿਆਲ ਚੰਦ ਸੱਲਣ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ I am a coordinator of ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ of ਬਹੁਜਨ ਦਰਾਵੜ ਪਾਰਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ, ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਵੱਧਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾਈਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਛਾਈ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦਸ਼ਰਥ ਦਾ ਬੇਟਾ ਏਕ ਰਾਮ ਘਟ ਘਟ में लेटा,
एक राम का सगल पसारा, एक राम सबहू से न्यारा। Yes. मेरे कहने का मतलब है ਜਿਹੜਾ सबहू से न्यारा है ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸਗਲ ਪਸਾਰਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ सबहू से न्यारा ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ सबहू से न्यारा ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਛੁਪ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਾਜ ਕਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਬਹੁਜਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ 95 ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ 3-4% ਉਹ ਕਿੱਥੇ 95%। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਈਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਧੇ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਨਸੈਪਟ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀਗਾ, सबहू से न्यारा। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਲਯੁਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਈਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਇੱਕ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੰਦਾ ਲੋਕ ਐਕਚੁਅਲ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਡਾ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਔਰ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ 1% ਵੀ ਲੋਕ ਜੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਜ ਸਾਰਾ ਟੋਟਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਘੁੰਮਣਾ, ਉਹ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਮਹਾਪੁਰਸ਼, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੋ 5000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮਨੁ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਆਈ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੈਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਟਰਪਟ ਕੀਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। Thank you, Gurdial Chand ji. Very nice put together. 3 मिनट रहे अपने को, अपना इन्होंने थोड़ा अपने गलबात करके समाप्त कर दूंगा मैं। 2-3 मिनट के अंदर है। I like to invite for a couple of minutes Dinesh Kumar if he likes to add anything. ठीक है Dinesh Kumar ji. दिनेश कुमार गौतम जी अपने ऑडियो ऑन करें। Okay. If not anyone else, Sanjeev Kumar, Umesh Ravi, anyone of you like to add anything for a couple of minutes, please go ahead now. All right. Let me go back to Jeevan Malla. Would you like to summarize what you got all out of this meeting, please? So I want to thank you to your channel to discuss about the concept behind the begumpura. So finally, I want to tell about the begumpura. Begumpura describes the political, economic, social, cultural system as well a favor the use of the rights and resource given by Almighty God, Mother Nature, family, and society for humanity. Guru Ravidas, he is in favor of personal liberty also. The United Nations also follows the ideas of Begumpuraism. Gives the economical, military resources to the weakest, resolves the disputes
provides a education, provides a medical, food, and provides a peace army also. Development of art, music, preserves the civilization. India's Prime Minister, Nehru, betrayed the country by rejecting the permanent membership Security Council on the request of the United Nations. But deposit the country's wealth in Swiss bank, claiming as his own. Today, non-aligned movement created by Nehru, Tito and Nasser are counting their last breaths. The current Indian Prime Minister, Mr. Modi, is also neglecting, ignoring a begumpuraism. And United Nations recommends and working for the progressive welfare of Adani and Jinping, the Chinese premier. Only with imposing GST on every citizen of India. 4 years recruitment of defense force. Only 4 years. 4 years recruitment of defense force, and not creating a marines and opening of the war department is still awaited for the high degree of military preparedness. Sant Guru Ravidas praised the work done by hand and mind for livelihood and reject a livelihood of beggar. The details of Sant Ravidas' life are well known. Some scholars stated he was born in 13th to 15th century in the Banaras at the age of 51 years. And also I want to tell. Sant Guru Ravidas met Guru Nanak, the founder of the Sikhism. Not much is authentically known about Guru Ravidas, who was held in much high by his contemporary and successor, that when the fifth Guru, Sikh Guru, Arjun Dev compiled the Adi Granth, revered by the Sikh as the living Guru, he included 40 of Guru Ravidas Banis along with Sheikh Fried, Namdev, Kabir and others. The test of these 40 Banis, that is more important. Yes. The test of these 40 Banis is considered to be the most authoritative, as there are difference of opinion among the scholars about the test of others saying. Thank you for sharing that. He is revered in the Sikh scripture. Yeah. Yes. These poems are one of the oldest. These poems are one of the oldest source of the ideas and literary work. Thank you. Actually, you know, in Charter of Human Rights by United Nations in 1948 came much recently, while the complete compilation of Guru Granth Sahib, which is again a compendium about the human rights. Exactly. That's what it all talks about. And also I want to add more one point. Manevar Kanshiramji never made a public, issued his party manifesto. He never issued any manifesto. However, he declared in the public that Guru Granth Sahib is his party manifesto. That is the guts of Manevar Kanshiramji. Baniyas of the Guru Granth, Banis of Guru Granth Sahib can be implemented only by making begumpura India as soon as possible. Exactly. So we have the concepts of begumpura through Bhakt Ravdas Ji, the mini example of Golden Darbar Sahib Amritsar, the whole setup itself, with United Nations Charter of Human Rights. When we look at all these things in different ways of being brought into our attention. So it's our job is to actually practice it and share it with the public at large. And I commend you for undertaking this yatra, begumpura Yatra from in due course of time, to emphasize this point. And I want to wish all the best, all participants, thank you for participation, and thank you for
initiating this Thank you very much. program, and thanks to Meghraj Singh for initiating with Voice of Manavta this discussion dialogue opportunity. And I look forward for us to do more often about discuss what we are achieving and what more we ought to do to actually realize the dream of Begumpura. अब मैं 2-3 बात ऐड करना चाहूंगा। जैसे गुरुवर्धन साहब की बात की है, गुरुवर्धन साहब ने पूरे ब्राह्मणवाद को ध्वस्त किया। उन्होंने कि गुरु ग्रंथ साहब के अंदर एक पंक्ति लिखी है कि क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र वैश्य उपदेश चहुवर्णा को साझा। उन्होंने ऐसे क्यों लिखा? वहां पर ये भी लिख सकते थे कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ऐसे चला आ रहा था। 5000 साल के इतिहास को ध्वस्त करके रख दिया। गुरु साहब ने कहा कि क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र, जिस शूद्र को चौथे डंडा पकड़ा गया था उसको ब्राह्मण के पास ला खड़ा कर दिया, और क्षत्रिय इसके ऊपर बैठ गया ब्राह्मण के ऊपर आकर के शूद्र जो है ना उसको वैश्य को नीचे उतार दिया। तो गुरु साहब का बहुत बड़ा चैलेंज था इन लोगों को। तो जहाँ पर गमों के जात पात में गम जी रहे हैं, जहाँ पर लोग भूखमरी के गम जी रहे हैं, जहाँ पर लोग बेरोजगारी गम जी रहे हैं, तो साथियों बड़ी खुशी की बात है कि बेगमपुरा यात्रा, बेगम का मतलब है जहाँ पर गम नहीं है, जहाँ पर खुशी आदमी जिएंगे। तो इसी यात्रा निकलने वाली भारत में, तो ये हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं। और अब वाइस मानवता हमेशा सच्चे लोगों के साथ में रहता है, हमेशा सच्चे की आवाज उठाता है। एक प्लान हमारे पास भी है, अगर भारत के लोग चाहते हैं इसके गुलामी के गटर से निकलना, जात पात के गटर से निकलना, हम जात पातों गटर मानते हैं इसको, और इससे अगर निकलना चाहते हैं हमारे पास एक प्लान है। अगर 100 रुपया सिर्फ 1 करोड़ आदमी हमें दे देंगे, इसमें 100 रुपए हर महीने के डोनेशन का देते हैं, 100 रुपया 1 करोड़ आदमी, तो हमारे पास में 100 करोड़ रुपए होगा। तो 100 करोड़ रुपए अगर हमारे पास हर महीने 31 महीने तक आ जाए तो भारत को हेल्थ फ्री कर देंगे, एजुकेशन फ्री कर देंगे, नौजवानों को इसमें रोजगार देंगे। तो कम से कम भी 5000 नौजवानों को हर महीने इसको रोजगार मिलेगा। तो इससे हमारा ऐसे सिस्टम लागू करें तो भारत को 31 महीने में डेवलप कर सकते हैं। तो सिर्फ एक करोड़ आदमी सिर्फ 100 रुपए डोनेशन निकाल सकते हैं। तो इसमें देखे फिर हम हेल्थ फ्री करेंगे, एजुकेशन फ्री कर सकते हैं। तो सभी का धन्यवाद है। डॉक्टर त्रिपाठी जी आप जी का स्पेशल धन्यवाद, और अशोक सागर जी आपका भी, भोला जी आपका भी, और आपका भी, सिंधु कुमार जी आपका भी, सभी साथियों का स्पेशल धन्यवाद। और ये जीवन है जो बेगमपुरा यात्रा है, इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। जैसे अडवाणी ने रथ यात्रा निकाल करके हिंदुत्व को जिंदा किया था, ऐसे ही यात्रा निकलेगी, बहुजन भी जिंदा हो जाएगा। तो जिंदे वही होते हैं जो सच बोलते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं और अपने राज को पकड़ के जिंदगी में राज करने लायक होते हैं। थैंक यू सबका। सत श्री अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा। Thank you everyone. Thank you.